और मुल्तान सुल्तान्स एक और तीसरा गेम अपना जीत चुके हैं एंड लाहौर कलंदर्स हैव लॉस्ट 3 आउट ऑफ 3। वेलकम टू द शाइनी साइड। मैं आपका होस्ट फरीस और मेरे साथ आज हैं काजी उमैर अली, जो अभी तक इफ्तिखार की बैटिंग के उनकी शक्ल पर नजर आ रहा है कि वो काफी एक्साइटेड हैं। काजी कैसे हैं आप एंड ठीक इनिशियल ठाक। रिएक्शन मैच देखने के बाद? थैंक यू फरीस फॉर हैविंग मी ओवर अगेन। मज़ा आया। इट वाज अ क्लोज मैच। लग नहीं रहा था कि एंड तक इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मेरा अपना ख्याल था कि आखिरी ओवर तक बॉल जाएगी, बट आई गेस चाचा बहुत ही वाले मूड में खेले और बिल्कुल। उन्होंने कहा कि क्यों मैं आखिरी ओवर तक जाने दूं, लेट्स फिनिश दिस गेम। ऑल्दो मैं ज़रा सा इसके अंदर फ़खर जमान का भी था कि वो उसने सारी मोमेंटम चेंज करी। वो शुड उसको चौका रोक लेना चाहिए था। और वो दैट रियली हेल्प्स इन दीज लास्ट ओवर फिनिशेस बिल्कुल। कि अगर आप बाउंड्री दे दें। बट चलें, इवन देन चाचा से को क्रेडिट फॉर दोज टू सिक्सेस या सो एंड बैटिंग डाउन जी। Yeah. I guess to kick things off, I will quickly do a 33-second summary for those of you who may not have seen the whole entire game. So, Lahore batted first after winning the toss. They had a good power play and only 49 बनाए for one. लेकिन power play के बाद things really slowed down. Van Dustin और फखर जमान batting कर रहे थे. They couldn't really, especially take on the spin as the pace came off the ball. एंड इवेंचुअली कार्लोस ब्रैथवेट ने, जहादार ने थोड़ा सी एंड में हिटिंग कर की, तो आखिरी 4 ओवर में 40 करके उनको वो 166 तक ले गए, विच सीम्ड लाइक अ मिडलिंग स्कोर इवन दो थोड़ी कंडीशन स्लो थी। एंड देन वंस रिजवान अगेन दे वर 15 for 2 मुल्तान सुल्तान, वहां से रिजवान ने बहुत लंबी इनिंग खेली, 80 प्लस बनाया और समझो उनको एट द वर्ज ऑफ विन तक लेके गए। एंड देन चाचा केम एंड फिनिश्ड इट ऑफ कंप्लीटली। सो I guess to start with at the top, I think we have to talk about in the first innings, it didn't seem like it was easy to bat. And फखर जमान की अगर आप बात करें, फखर Yeah, जमान पहले 22 रन उन्होंने 10 बॉलों में बनाए और that's उसके it. बाद उन्होंने 19 रन बनाए अगली 26 बॉलों में। So once the first 4 overs ended, he kind of struggled to time the ball. What did you make of that? Yeah, and we were discussing this issue with Imam ul Haq, if you remember, in the recently concluded 50 over World Cup, कि वो पहले कुछ 10 रन बहुत तेजी से बनाते थे और फिर उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी और वो रुक जाते थे। फखर जमान का भी यही मसला है कि आप देखेंगे कि T20 के अंदर जो मेन ओवर्स होते हैं वो 7th से लेके 15th होते हैं। दैट्स वेयर यू एक्चुअली बिल्ड द इंटायर इनिंग्स, वहां से आप लॉन्च करते हैं। और फखर जमान तो इतने एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो पहले 2 ओवर में टेक ऑफ कर गए तो वो रुकेंगे नहीं। पर ठीक है, विकेट में बॉल थोड़ा स्लो आ रहा था और मोहम्मद अली और अब्बास अफरीदी ने बहुत इंटेलिजेंट बॉलिंग करी। जी। दे वेरीड देयर पेस, दे गेव अ वेरी टफ टाइम टू फखर जमान। उनको खुल के नहीं खेलने दिया। मगर आप जी। देखें उनके जो ऑफ साइड के बाउंड्रीज भी थे वो स्ट्रगल करके किए, कोई ऐसे फ्री फ्लो में नहीं थे। तो उसको डिप इन फॉर्म तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उनका फॉर्म पिछले 3-4 महीने से अच्छा ही चल रहा है। वो जब से जी, काफी वो स्ट्रांग चल वर्ल्ड रहा है कप में, एक्चुअली। हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद से तो अच्छे फॉर्म में। तो क्रेडिट टू मुल्तान सुल्तान फॉर बॉलिंग जी, वेल इन दोस मिडल ऑर्डर ओवर्स एंड नॉट लेटिंग लाहौर रन अवे विद द गेम। बिल्कुल। आई थिंक देयर वाज अ ओवर 7 to 9 का पीरियड जो था आफ्टर स्ट्रॉन्ग पावर प्ले, उन्होंने सिर्फ 15 रन बनाए। वहां पे उसामा के 2 ओवर थे। जी। चाचा इफ्ती मीनिया ने भी एक ओवर कराया बाद में, लाइक यू सेड मोहम्मद अली डेजी जो एंड अब्बास आफरीदी वर वेरी गुड इन द मिडल ओवर्स। ये मोहम्मद अली डेजी जो आए हैं, इनका नाम भी फनी सा है। उसके अलावा ये आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम टू बी ऑनेस्ट टिल अ वीक अगो। एंड वो ऐसे बॉलिंग करें, ऐसे कंपोजर, जैसे वो सालों साल क्रिकेट खेले में। व्हाट डू यू मेक ऑफ हिम? आई मीन अली तरीन इन द लास्ट मैच, वो उनकी होती है मैच के बाद, वो अपने हडल में बैठते हैं और एक दूसरे को मैन ऑफ द मैच और प्लेयर इम्पैक्ट प्लेयर। तो उसमें जो लास्ट मैच में उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर का अवार्ड दिया मोहम्मद अली डेजी को। ही इज एक्चुअली, वो होता है ना आपके यहाँ राइजिंग फ्रॉम द फिनिक्स वाली सिचुएशन, वो वाली है। मतलब ही पिक्ड हिम आउट ऑफ द ब्लू, ही शोन फेथ इन हिम। पिछले 3 सीजन से कोई उनको सिलेक्ट नहीं कर रहा था और एकदम से वो आए। देखिए, मैं ये बोलूंगा कि उनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वो अपनी लिमिटेशंस जानते हैं। ही नोज कि उनकी क्या लिमिटेशंस है, उनकी क्या पेस है, उनकी क्या लाइन होनी चाहिए। वो कुछ ज्यादा नया एक्सपेरिमेंट नहीं करते। एक ही लेंथ बॉल की वो लाइन मेंटेन करते हैं, स्विंग भी आती है और बॉल की पे कंट्रोल सबसे अच्छा है। तो बिकॉज नो वन हैज सीन हिम इन द पास्ट, किसी टीम ने उनको ज्यादा जी। खेला हुआ भी नहीं है,
So I think that's creating an impact, and it'll probably grow as he experiences and he becomes more Yeah. experienced as the PSL proceeds. आई थिंक हम ये बात अभी कर रहे थे ऑफलाइन के मुल्तान सुल्तान्स की जो टैलेंट हंट प्रोग्राम काफी स्ट्रॉन्ग है कुछ पिछले 3 साल में दे फाउंड एहसानुल्लाह अब्बास आफरीदी या नाउ मोहम्मद अली डेजी राइट ये 3 बॉलर्स हैं जिनको मुल्तान सुल्तान से पहले सच ज्यादा लोगों ने पिक नहीं किया था बट इनकी ऑब्वियसली जिन्होंने तीनों को उन्होंने उठाया आई थिंक इसी इनिंग्स पे अगर वापस आए तो ब्रैथवेट और जहांदाद ने आखिरी 4 ओवर में 40 रन बना के 166 पे ले Yeah. गए विच टू बी ऑनेस्ट इन T20 इन PSL इज नॉट अ वेरी हाई स्कोर लेकिन ट्रैक थोड़ा स्लो था और वहां Correct. पे जब इनके 15 पे 2 आउट हो गए तो वहां पे गेम थोड़ा फंसना शुरू हो गया था तो वहां पे रिजवान ने आई थिंक इस 160 ऐसा स्कोर था ये रिजवान के कंफर्ट जोन के विद इन था बट था। हाउ डिड यू सी रिजवान बिकॉज़ रिजवान आई थिंक 180 प्लस का जब टारगेट होता है देन ही नीड्स हेल्प फ्रॉम अदर पीपल ऑन द अदर एंड बट यहाँ पे रिजवान ने आई थिंक काफी एक परफेक्ट नॉक खेली हाउ डिड यू सी हिज आप बैटिंग सही कह रहे हैं। So before I go to Rizwan, I'd like to talk about Jhandad as well, because जो पिछला मैच था उसमें भी उन्होंने बड़ी जहाराना इनिंग्स खेली थी जी और लाहौर को एक रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ ले गए थे। तो एक उस टैलेंट को भी हमें अप्रिशिएट करने की जरूरत है, बिकॉज ही इज आल्सो वन ऑफ द अर्ली फाइंड्स ऑफ दिस पीएसएल। ही इज बीन इन द फेस, ही इज बी एट बॉलिंग में इतना नहीं, बट बैटिंग तो उनकी इम्पैक्टफुल है। बिल्कुल बिल्कुल तक रिजवान की बात है तो देखें, रिजवान एंड ये डिबेट बहुत अरसे से चल रहा है कि आई थिंक फॉर पाकिस्तान एटलीस्ट एट द इंटरनेशनल लेवल रिजवान माइट बी द सोल्यूशन एज फार एज कैप्टनसी इज कंसर्न, बिकॉज ना सिर्फ बैटिंग में आप अगर कंपेयर करें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही रियलाइज कि आज 2 विकेटें जल्दी गिर गई हैं, मुझे पूरी इनिंग्स में खड़े होने की जरूरत है। पर उसका गेम नहीं चेंज हुआ। उसने जहां अटैक करना था अटैक किया। आप देखें हारिस रऊफ को शाहीन ऐसे टाइम पे लाए जब उनको एहसास हुआ कि जी 2 विकेटें गिरी हुई हैं, दिस माइट बी अ गुड टाइम टू ब्रिंग हिम बैक इन फॉर्म, या उनको जरा नए बैट्समैन को बॉलिंग करने का मौका मिलेगा, वो कुछ कंटेन कर। अभी तो शाहीन को जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए आप और आप कैप्टनसी चेंज करने के चक्करों में बट चले आई मीन फेयर इनफ फेयर देखिए, कमेंट आई गेस जब नेक्स्ट टाइम चेंज की बात आएगी तो रिजवान डेफिनेटली उनका नाम वहां पे होगा आई गेस इफ यू लुक एट द बैटिंग एक और जो उन्होंने चेंज किया उन्होंने विली को प्रमोट किया चाचा और हाँ, खुशदिल से पहले ना अगर आप देखिए उनकी पार्टनरशिप काफी लंबी हुई पर जब रिजवान आउट हुए तो विली ने 19 बॉलों में से 17 रन बनाए थे तो कंट्रीब्यूशन सारा वहां पे रिजवान ही का था इट्स नॉट लाइक विली नॉर्मली एक अग्रेसिव बैट्समैन है बट ही वाजंट रियली एबल टू गेट द बॉल अवे एक उन्होंने बस आई एंड में थिंक छक्का लगाया शाहीन आफरीदी के खिलाफ बट दैट वाज व्हाट डिड यू मेक ऑफ दैट मूव विली आई को प्रमोट थिंक करने की I think the idea was to, and I understand, but I think the idea for Willie to come up was कि वो जरा सी pinch hitting करेंगे और स्कोर को एक्सेलरेट करेंगे। दूसरा एंगल ये भी था कि वो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन जो है वो जरा सा वर्क करेगा। आई अंडरस्टैंड वो खुशदिल भी वही ऑप्शन देता, वो भी तो लेफ्ट हैंडर ही था, बट खुशदिल के गेम प्ले से ये लोग जरा वाकिफ थे कि वो कैसे खेलता है। नो वन हैड एवर सीन विली बैट अप द या ऑर्डर इन दैट सिचुएशन। एंड ठीक है, वो एक छक्का आपने बात करी, बट वो एक छक्का मारने के बाद जो मोमेंटम चाचा ने पिक किया है, वही फिर एंड में मुल्तान सुल्तान को जी टुक देम ओवर द लाइन। एंड वी हैव टॉक अबाउट चाचा है सो जब जब रिजवान आउट हुए 39 चाहिए थे 21 बॉलों में और वहां पे मैच थोड़ा फंस सकता था लेकिन हो चाचा सकता ने है। पहली बॉल पे आते ही इन्होंने शाहीन को चौका मारा और वहां पे उनकी और शाहीन की थोड़ी सी मुंहमारी भी हुई है एंड लग रहा है कि चाचा ने उसके बाद कहा अब तो मुझे ही वेंट फॉर लिटरली एवरी बॉल ही वाज गोइंग फॉर इट एंड इट Yeah. मोस्टली केम ऑफ एंड आई थिंक चाचा इज आई थिंक उनकी जो एक स्ट्रगल है ना वो स्पिन के खिलाफ स्टार्ट करते हुए स्ट्रगल करते हैं लेकिन अगर पेस आ रही हो दैट चाचा इज एक्चुअली जनरली कैन वेरी ऑफन कम एंड टेक ऑन first thing, and also I think he was the star of the night. Yeah, I often say this, and people, I don't know, they don't understand this, but I think Chacha is a fast version of Misbah ul Haq. If you see his batting stance and you see how deep in the crease he bats, especially when he's playing against fast bowlers, जी Misbah used to do exactly the same thing. Misbah भी जब छक्का मारता था तो लंबा मारता था, and Chacha does the same. And yes, you're right, वो उनका pace is a strong point. जरा स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा सा पिक करने में टाइम लेते हैं। और बस मैं एक पॉइंट और यहाँ पे शाहीन का करना चाहूंगा। देखें, शाहीन हैज डन वेल फॉर लाहौर कलंदर्स इन द लास्ट 2 सीजन्स, बट माय ओनली प्रॉब्लम विद शाहीन इज दैट ही इज हॉरिबल एट टेकिंग रिव्यूज। लाइक ही जस्ट विल वेस्ट रिव्यूज व्हेन नॉट नीडेड टू। अब अगर आप देखें, उसने इनिंग्स की शुरू में बिल्कुल 2 रिव्यूज जाया की। And at least now with Shaheen having captained Lahore Qalandars for so long, at least उनको अब ये पता होना चाहिए कि यार अगर 3 रिव्यू हैं तो मैंने एक तो लास्ट ओवर्स के लिए बचाना है।
ठीक है, अब वो ठीक है, आज इफ्तिखार ने मौका ही नहीं दिया, वहां तक बात ही नहीं गई। बट ये जो एक ऑप्शन होती है ना ऑफ हैविंग अ रिव्यू दैट रियली प्लेज ऑन द एंड कैन टर्न द मैच फॉर यू। एक एम्पायर का गलत डिसीजन और आपके पास रिव्यू ना होना कैन एंटायरली चेंज द एंटायर कॉम्प्लेक्शन। बिल्कुल। तो शाहीन अपने आप पे जरा ये एक्स्ट्रा प्रेशर भी डालते हैं, बिकॉज उनके रिव्यूज जो होते हैं ना वो बहुत ही इन वो सॉरी जमान खान के रिव्यू के अलावा बाकी दोनों रिव्यूज मेड नो जी। सेंस एट ऑल। तो बस टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने जो विली की विकेट ली, मुझे तो कहीं से वो आउट भी नहीं लग रहा था। आई वाज क्वाइट श्योर इट्स नहीं गोइंग लग डाउन द रहा लेग साइड, बट था। समहाउ डीआरएस, Somehow DRS खैर, is clipped. आई I गेस। think it was umpire's call, that's why. हाँ, बट इवन देन मुझे तो अगेन फॉर मी इट सीम्ड क्लियर, बट एनीवे, आई गेस आज Yeah. ये तो मैच खत्म हो गया। आज सुबह एक और भी मैच हुआ, पेशावर और कराची का। ना ये दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी थी, तो दोनों के लिए काफी जरूरी मैच था ये। कराची ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की। कराची ने विकेट कीपर नया लेके आया, अखलाक को लेके आया। पेशावर जल्मी जो अफगानिस्तान के एक अननोन स्पिनर है, सलाम खेर, उनको लेके आए। एंड पेशावर, अनफॉर्चुनेटली फॉर पेशावर, उन्होंने मलिक ने बॉलिंग ओपन की कराची के लिए। पहली बॉल पे ही गॉट साइम आउट। बिल्कुल आम Yeah, बॉल yeah. थी, वो ड्राइव करते हुए गए और वो बोल्ड हो गए। और उसके बाद से बाबर एक्चुअली बैटेड क्वाइट वेल, ही मेड 72 और 51, लेकिन इनके जो बाकी टॉप फोर में जो बाकी तीन बैट्समैन है, कंबाइंड फॉर 4 रन, तो बिल्कुल 8 रन सॉरी, तो बिल्कुल भी उनको बाबर को सपोर्ट नहीं मिली आज वहां पे टॉप ऑर्डर में पेशावर के। Okay, this is a very important point in terms of captaincy. I'm honestly, I wasn't so keen, and I was rather surprised जब पता लगा कि कराची किंग्स के कप्तान इस साल शान मसूद हैं। बट आप शान मसूद की कैप्टनसी में और बाबर आजम की कैप्टनसी में स्टॉक डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। इसी मैच में आप देखें, बाबर आजम एज ऑलवेज हैज बीन अ वेरी डिफेंसिव कैप्टन। वो अपने नॉर्मल स्ट्रेटजीज को चेंज नहीं करते। अब आप एग्जांपल देखें कराची किंग्स की, आज ओपनिंग आपने खुद बताया, बॉलिंग ओपन करी शोएब मलिक ने। इट वाज अ कंप्लीटली आउट ऑफ द ब्लू सिस्टम, ठीक है ना, नो वन एक्सपेक्टेड शोएब आउट ऑफ मलिक। सिलेबस कंप्लीटली। Absolutely, but he did the job, right? He got Saim Ayub out. Saim is एंड in उसको great दूसरा ओवर form. भी नहीं दिया उन्होंने, दैट्स ऑल ही वांटेड हिम टू डू। That's all he want. Exactly. This is what I'm saying. कि Shan Masood, while I mean, I doubt his ability to bat in T20s, and I don't think he's a T20 player. But at least you can see कि वो 3 टेस्ट मैचेस में जो कप्तानी किए हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें हम एक्चुअली बड़े करीब आए मैच जीतने में, और उनकी एक दो इनिंग्स भी अच्छी थी। ठीक है, उनसे नहीं हुआ, बहुत से कप्तानों से पिछले 30 साल से नहीं हुआ है, तो आई गिव हिम द मार्जिन। बट यू कैन सी द डिफरेंस इन हिज कैप्टनसी। आज भी आप देखें, उन्होंने रन ज्यादा नहीं बनाए, बट वो छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगाई। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कराची के वो आज स्कोर करें, एंड फॉर कराची सेक, एंड एक्चुअली फॉर द पीएसएल एज वेल। केरन पोलार्ड के जो इनिंग्स खेली है ना, वो आज 4 छक्के जो हैं, जी। हम दैट उस पे विल नाउ हम उस पे लाइट अप द पीएसएल। अभी आते हैं, बट आई थिंक इफ यू स्टिक टू पेशावर बैटिंग, आई थिंक देयर वाज अ पॉइंट वेयर पेशावर 136 फॉर 4, वहां पे 22 या बॉलें बाकी थी। एंड यू थॉट कि 22 बॉलें बाकी हैं, 136 से कम 30-40 बन जाएगा, तो 160-70 तो बन जाएगा उसको। बट वहां पे दे लॉस्ट स्कोर्ड 18 runs and lost 5 wickets and they were bowled out really in the next 18 balls. So I think वहां पे काफी इनका कोलैप्स हुआ। हसन अली, मीर हमजा, etc. They all pitched in with some wickets, and Peshawar could just not finish the innings well. Yeah, I think again, like the valid point you made earlier, Babar Azam absolutely got no support whatsoever. Like no one clicked. He is the only one who got a 70 or 72, I think, बनाए उन्होंने आज. जी। But वो बेचारा क्या करता है? They had no one to stand Yeah. around with him. Hmm. And although पेशावर की अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें, it's a pretty strong बैटिंग लाइनअप. ये नहीं है कि So कोई to be honest, अननोन. रिव्यू में मेरा व्यू ये था कि पेशावर की बॉलिंग सबसे कमजोर है, बट बैटिंग इज रियली स्ट्रांग। दैट वाज माय व्यू। और आज मैं सोच रहा हूँ कि यार, डिड आई मिस असेस देम एक्चुअली। I think review में तो and I think we got that call right the other day about Quetta Gladiators as well. Barring Usman, they played exactly the same thing and they Yeah. got the combinations just right Yeah. in the second match as well. So yes, I agree. I'm very surprised कि पेशावर की बैटिंग, I think अभी still early stages हैं, 2 मैच ही हुए हैं, Yeah. अभी छः Yeah. छः मैच बाकी Yeah. हैं. It's a matter of one. It's a T20 यार, एक दो मैच Yeah. अच्छे होते हैं and बिल्कुल। things change. सो It's still ना early days. पेशावर अपने 2 मैचेस हार चुके ना। आप अगर कराची की देखें, तो कराची की बैटिंग लैक्स सम सीरियस फायर पावर। हैविंग सेड दैट, अगर आपने 160 से कम स्कोर चेस करना है, उसके लिए काफी बैट्समैन हैं जो उसके लिए काफी वेल सूटेड हैं उसमें। राइट, तो शोएब मलिक हैं, शान मसूद हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड ये लाइक आई सेड अंडर 160 उनकी कंफर्ट जोन में आता है। हैविंग सेड दैट, शोएब मलिक ने आज काफी 50 बनाई उन्होंने, लेकिन उन्होंने सॉरी उन्होंने 50 नहीं बनाई, उन्होंने रन अ बॉल इनिंग खेली, अबाउट 30 और बनाए, बट ही वाजंट
run the ball, it was slower than what they needed. And Shan Masood ने भी थोड़ा आहिस्ता खेला, लेकिन it was again, आपने पहले point raise किया कैरन पोलार्ड की जो नहीं थी, जब पोलार्ड बैटिंग करने आए Yeah. 67 चाहिए थे 47 बॉल्स में, जो स्लो स्कोरिंग मैच में इट वाजंट दैट ऑब्वियस, एंड वहां पे Yeah. तो कैरन पोलार्ड ने तो जो इनिंग खेली है संजय, उन्होंने गेम ही खत्म कर दिया बिल्कुल। हाँ, उन्होंने वही किया जो चाचा ने किया है अभी लाहौर के हाँ साथ। जी एंड देखिए, शोएब मलिक के बारे में, यू मेड दिस पॉइंट अर्लियर अबाउट रिजवान एंड हिज कंफर्ट जोन के, यार अगर 160 के अंदर अंदर है ना तो वो चेस कर लेते हैं। बट शोएब मलिक इज अ वास्टली एक्सपीरियंस T20 प्लेयर, ठीक है, वो उसके पिछले मैच में भी 50 बनाए व्हेन नो वन एल्स गॉट रन्स। तो आई थिंक व्हाट दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट इज कि शोएब मलिक को एग्जैक्ट हमने किस नंबर पे खिलाना है अकॉर्डिंग टू द स्कोर दैट दे आर चेजिंग। नाउ इन द लास्ट मैच इफ यू सी, उनका बड़ा लंबा टारगेट था, एंड आई थिंक दे मेड अ मिस्टेक बाय पुटिंग शोएब मलिक वे डाउन द ऑर्डर। Shoaib Malik is the sort of guy, if you're chasing a higher target, you need to put him one down so he can maneuver the innings. And he's done it so many times. I think Karachi is still trying to get the combination right. But the important thing was कि वो at least उन्होंने कोई partnerships में collapse नहीं होने दिया. जी। And then Karen Pollard did what I mean, I think he did. मेरा ये व्यू है The कि कराची will struggle to powerhouse. score above 160 the days Pollard does not do anything, because उनकी जो बैटिंग लाइनअप है, they struggle to score beyond a certain rate. There's nobody there who's really explosive. So I think उनकी dependency काफी ज्यादा है Pollard के ऊपर. Like I don't think वो 170 भी बना पाएंगे without Karen Pollard's contribution. I think the only two high strike rate batsmen in their team is one Shoaib Malik and the other would be बट शोएब Kieran मलिक का Pollard. स्ट्राइक I रेट think हाई these तो are नहीं the है उनका, अगर आप उनका हर पीएसएल में उठा के but वो देखें तो बाबर फिनिशर और तो है रिजवान से ना। तो कम ही है उनका। नहीं, बट देखो वो फिनिशर तो है ना, वो नहीं, बाबर फिनिशर और होना रिजवान अलग की चीज है, तरह बट ऊपर बैठ। फिनिशिंग होना अलग चीज है, वो खड़े रहते हैं, बट ठीक स्ट्राइक रेट की बात हो रही है। है, हाँ, बट आई नो व्हाट आई मीन टू से इज कि देखिए अगर वो एंड ओवर्स में आते हैं ना तो यू कैन एक्सपेक्ट शोएब मलिक टू अप द एंटी। वो उस तरह का प्लेयर नहीं है जो टाइम But लेता। again, I think what I'm saying बट is या for them to score किरण पोलार्ड 170, वुड बी somebody needs to score alongside Shoaib Malik at that rapid rate. And unless Pollard समवन। does it, then I don't know who will. I mean, look, like I said earlier, if Shan Masood is captain, he's not really a Yeah, T20 player. Let's yeah, be honest. He's more of a test batsman. बिल्कुल। He struggles to hold a place in the one-day team. तो अब यहाँ कप्तान बनाए उनको, तो कप्तानी तो उनकी काफी इनोवेटिव है. हम्म, But you know, he struggled with Multan as well in the last seasons. It's जी। not like he got great scores of 50 or something. तो ये struggle तो रहेगा Yeah. थोड़ा. I mean, to Although be look, to be Imad, fair, मेरे हिसाब से शोएब मलिक और शान मसूद की अगर जगह बनती है ना, तो it can be made, but जगह शोएब की definitely बनती है, but it's about the other players around them that are missing. So they don't have that combination right, yeah. in my view. That's true. I mean, look, Imad Wasim is also, like I think he would have been the right X factor for them because he can come towards the end and launch, and he's a great opening bowler. So I think वो combination थोड़ा सा कराची का time लग रहा है, but Hmm. it's like I said, I still mean, they're too in the early. middle of a transition, so I guess it'll take a season or Exactly. two to get right. जरा सा दो चार matches में perhaps he'll get the combination Yeah. right. But Okay, exciting so times. It's a good start. yeah, Yes. tomorrow we have another game, only one game. यहाँ Yeah. पे जो मैच है कल, वो इस्लामाबाद इज टेकिंग ऑन क्वेटा अगेन। क्वेटा की हमने पहले भी बात की, क्वेटा इज नाउ हैवंट लॉस्ट अ गेम येट। इस्लामाबाद एक जीता एक हारा है। जी. Don't have any major reason to expect either of the teams to make a change to the lineup. This is the possible 11s वही हैं जो last time थी। Yeah. Yeah. Who do you see coming off tomorrow, and who do you think are the key players for each team? Yeah, I think the surprise package, I think for everyone is Saud Shakil. That guy Yeah. is shown his explosive side. Like Yes. no one expected him to score or hit the way he did. So he's obviously one key player. Jason Roy is always explosive. I'm very, very excited for Khwaja Nafe. That guy has been he's lit up the PSL at the start. Yeah, yeah. And I'm looking forward because देखिए इस्लामाबाद की टीम में इमाद वसीम है. Imad Wasim will most likely open the bowling as he usually does. And if he's Imad Wasim, Khwaja Nafe, Saud Shakil, great competition, So Yeah. it'll be a break it or win it wala situation within the team. Another player that I'm really excited or looking forward to is Agha Salman. That Yeah. guy, I think, is Pakistan's, even at the T20 level, international level, he's probably Pakistan's middle order solution Yeah. right now. If he has a great tournament with the T20 World Cup coming, I think वो या फोर का जो हमारा गैप आ रहा है, साउथ शकील को नहीं खिला रहे थे बिकॉज दिस इन T20 एज वेल. दिस PSL इज, आई ये चार प्लेयर्स मेरे लिए आर द
what I look forward to at least tomorrow. Okay. इनसे पिछले मैचेस में जो एक्साइटमेंट क्रिएट हुई है वो बरकरार रहेगी. Hmm. टीम्स इवनली मैच्ड हैं, so it really matter on the day who performs better. Yeah. But the reason we don't pay you the big bucks is you have to make a prediction. So who will you go with? Right now, Quetta, I think they're in Okay. a bit of a flow. They've won 2 matches on the trot, and 2 convincing ones. Actually, Pella Wala, they chased really well. So, right now, Quetta, but I wouldn't write Islamabad off. So, like we For discussed, they're always uh, the stronger team in PSL. for the sake of to make this interesting, I'll go with Islamabad. My view is कि क्वेटा की जो इस performance रहेगी season काफी consistent रहेगी. But Islamabad has a lot of aggressive players, so I feel like इनमें variation ज़्यादा आएगी. So I feel like Islamabad is due. So hopefully, for their sake, for their fans' sake, Let's hopefully see. they can come off. But let's see. It'll be a good match to me. Yeah, Yeah, definitely. look forward to it. But Qazi, thank you for being on the show. Pleasure having you. Most welcome. And we'll As hope to have you always. soon again in the PSL. And those of you watching, अगर आपका view है कि कल का match कौन जीतेगा, please leave a comment and like the video, subscribe to the channel, and we'll be back after tomorrow's game. In the meantime, stay tuned to the shiny side.